So good afternoon. We've seen the video. Now we will be doing the parts, various parts of the Good definitions. afternoon, sir. Good afternoon. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So bracket we have seen. Bracket was connecting to frame. So any structure member used to connect two members. So here you had a margin plate. I'd shown you the yellow one. That's connected to the floor. So here you have your tank side bracket, which is connected to frame. Then you have frames. The red ones which we have seen on the side. The web frame was the yellow one, the red one was the frame. These were the brackets. That was the shell plating. These are the beams. The beam knee here. The frames are like ribs that the transverse bolted or welded to the keel to support the hull and give the ship the strength and shape. So frame is resisting your water pressure stress. Because the water pressure stress is from outside, there is the hull plating. If there was no frame, then it would have just collapsed the plating. So the frame is protecting the inner structure of the ship from water pressure. Then you have floors. The floors we have seen. This was the plate floor with the holes. This was the center girder. And this intercostal side girder. This is the margin plate. This is the bilge plating. This is the bottom plating. So this is solid plate floor. This is the red one which we have seen, which is a watertight plate floor. This is centerline girder, intercostal side girder, margin plate, bilge plate. So this is between the tanks boundaries, TB tank boundaries. The bottom plating here. This is the bracket floor. In the video we have not seen this frame. So it is at the center line there was a bracket here. At the ship side there was a bracket here. Both are connected by a framing. These are the frame bars, top and bottom. So this is your intercostal side girder and there is a stiffener here. In between the frame bars you have structures like angle struts that I'll show you later. Here the plate is bent at 90 degrees. That is known as flanging. The bracket floor is bent at 90 degrees here to take the load of your tank top. So it is providing additional strength. Flanging. Why we are bending it? Why not welding it? Welding it, it can break. By bending it, the strength will remain. That's why we bend it at 90 degrees. That is flanging. So floors are members that are mounted perpendicular to the keel and girder. So it is in the double bottom tank. You have three types: solid floor, plate floor, and bracket floor. Solid floor is between two DB tanks. Solid plate floor is in the TB tank. Watertight plate floor. So this will be, I'll just mark it. Solid, watertight.
So the types of plate floor will be solid watertight, solid non-watertight, and bracket floor. The solid watertight will be between the tanks, DB tanks. Non-watertight will be inside one DB tank, the ones with the holes. The bracket floor are in between the solid plate floor. Now we come to another definition is transverse framing. Now framing is three types. One is transverse framing, which doesn't have longitudinals. One is longitudinal framing, which has longitudinals. And one is combined system of framing. I'll just show you the diagram here. Now this DB tank is transversely framed because there are no longitudinals. So this is your solid plate floor. This is the bracket floor. This is the framing of the bracket. So they are between the solid plate floors. The bracket floor is between solid plate floor, but there are no longitudinals. So this is transversely framed double bottom tank. So first we'll see what is transverse framing. So transverse framing is on small ships which are less than 120 meters. Let me show you other diagrams also of this. Now this ship is transversely framed because you don't find longitudinals. You have girders, but you don't have any longitudinals. So these are twin deck girders, bottom girders. These are your frames connected to each other here. This is a bottom transverse, deck transverse. So this is the transverse framing without longitudinals. We'll do that in detail afterwards. So this is your transverse framing. So we'll be doing in detail what is transverse framing and all. We're just doing the definition, then we'll do the detail of transverse framing. So in this diagram, if you see, this is transversely framed, no longitudinals, there's beams here, twin deck beams, and then you have floors here and the girder, no longitudinal. This plating side on the side is stringer plate. This plating on the side, this one. The arrow, if you can see the arrow, this is stringer plate. We'll come to the definition later. So transverse framing is usually on ships which are less than 120 meters length. Rings are formed of the floor, frames and beams, and they are spaced closely together. So they are all connected, which I've shown you like a ring. That your deck transfers, bottom transfers, frame, everything is connected like a ring. Now the longitudinal strength is provided by the keel, the center girder, side girder, deck girder, entire bottom,
deck and side plating, tank top, but you don't have longitudinals providing the longitudinal strength. Now the thing is, now these are not very long, these are small ships, so they can take the vertical load, rolling and dry docking stresses. But if your ship is very long, then you can have indentation between rings. Indentation means the plating will go inside, it will make a dent. So you can't afford to have dents on the ship if your ship is too long. So you can't have transverse framing on long ships. Below 120 meters you can have that, but beyond that length you can't have transverse framing. So if we have seen this diagram, this is the solid plate floor, bracket floor, solid plate floor, but no longitudinals. The DB tank. These are your girders, the yellow ones which we had seen. They also have manholes because the water has to pass from port to starboard. Now we come to deck beams. So deck beams we have seen in the video. They are transverse members that are connecting the top ends of the frame, forming the transverse framing of the deck. So deck beams are supporting the deck plating. So these are thwartship members which connect to your frames on both sides, and you have a beam knee connection between the beam, deck beam and the frame. So that is your deck beam which are going athwartships. Now we'll come to beam knee. This we have studied earlier in the stresses. So beam knee are connected between the beam and the frame, and they compensate for your racking stress. So it is actually a bracket, but there the position of this bracket is known as beam knee. So it is a bracket that connects your beam and frame to the shell plating and is located at the end of deck beams. So this is your beam knee. Now we come to shell plating. So this is your shell plating. The bottom outside plating is shell plating. So here you have these girders, the centerline girder. So this is a small boat, that's why you have not a flat keel but a bar keel. The strakes on both sides of the keel are known as garboard strakes. They are very strengthened. So this is your solid plate floor, non-watertight. And this is your intercostal girder. And this is your side frame and this is your bracket. So the plate outside is known as shell plating. The plate will be outside your frame also. So shell plating or hull plating is the outermost plating of the hull of the ship. They form the outer skin and the bottom skin of the hull. It is crucial for the longitudinal strength of the ship's structure. Now we come to deck. You know about it. So we'll come to the definitions covering, which is permanent type over a hold or hull. Main deck is uppermost continuous deck extending from bow to stern. So this is your main deck. This is a bulk carrier in which you have the hatches here, and the hatch coamings are here which support the hatch cover, and the coamings are supported by these structures, the supports here. These are your cranes with the grabs for discharging bulk cargo. Now we have the tank top. So this is your tank top.
So it is the inner watertight bottom of the double hull, double bottom of the ship provided at minimum height above bottom shell. So these are your girders which are going fore and aft. This is your tank top. That's the bracket of the bracket floor. And this is solid plate floor. Now we come to the stringer. Now this is a double hull VLCC. This is the double hull here, the double bottom, centerline girder. And the stiffeners here for the transverse bulkhead, and then you have stringer plates here. The plates where you can stand as a platform is not for a platform part, but this is providing strength. When it is across port to starboard, it is giving transverse strength. When it is going fore and aft, like this one in your passageway in the double hull, there it is providing longitudinal strength. So here in the passageway in the double hull, it is providing longitudinal strength, but on your bulkhead, transverse bulkhead, it is giving transverse strength. Here it is giving longitudinal strength. So it is a longitudinal structure plate. If it is giving longitudinal strength, then it is a longitudinal structure plate, which strengthens the hull of a vessel. So a longitudinal stiffener fitted along the ship's side or longitudinal bulkhead to provide strength and rigidity is a stringer plate. Now to explain, I'll show you again how the stringer is there. Now suppose this is your shell plating of the ship. So you have certain platforms created here inside. Now it will have certain thickness, that is the face plate here of the stringer plate. So this is the face plate of a stringer plate. So this is a stringer plate which is providing longitudinal strength. Sometimes the supporting is given here like this. So this is a tripping bracket of the stringer plate. So if I mark it out, what is the stringer plate? I'll just mark out with your color first. Suppose this is your longitudinal bulkhead. So now I'll come to what is stringer plate. Uh, so this is your tripping bracket. And now we'll come to the stringer plate. Suppose I'll mark it with yellow color. So this is your stringer plate. Then the stringer plate will have a face plate, which is this one. So this is your face plate, your stringer plate, and your tripping bracket. So that is giving you longitudinal strength. Now
stringer plate can also be giving transverse strength. How it will give, I'll just show you that way also. So this is your transverse bulkhead going from port to starboard. Here you can have a stringer plate also, which is going across. So this is the tripping bracket, this is the face plate, and the tripping bracket here will be like this. So here these ones are your these are your tripping brackets. This becomes your face plate, and this becomes your horizontal stringer. So this is a horizontal stringer. This is basically transverse horizontal stringer, and this is longitudinal horizontal stringer. Then I'll just make your. So these are the two stringers. I'll just mark it out, which is what, so that it becomes easier to make you understand. So this is your longitudinal bulkhead. So that's your longitudinal bulkhead. And this one basically is your transverse bulkhead. This is your stringer plate providing longitudinal strength. So this is providing longitudinal strength. And this one is your tripping bracket. So here you are going to have your tripping bracket. So this is stringer plate providing transverse strength. Here again is your face plate. This is a face plate
Similarly, here is a face plate. I'll mark just together here so that don't have to do two separate labeling. And then this is your stripping bracket. So here is details are of stringer plates. What are stringer plates? समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। 3D डायग्राम बना दिया, अब तो समझ आ जाएगा ना। 2D नहीं है, 3D है और कलर में है, तो इससे ज्यादा समझ आ जाता है जी सर। है ना। तो यस सर। 3D में जल्दी समझ आएगा ना, 2D में तो मुश्किल हो जाता है समझना। फिर आपके सामने अगर ड्रॉ किया जाए तो फिर और जल्दी समझ आएगा। सिर्फ आपको डायग्राम दिखाएंगे तो समझ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो स्ट्रिंजर इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रक्चरल प्लेट। तो अगर वो 4.5 जा रही है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रक्चरल प्लेट है जो स्टिफन कर रही है। अगर वो अथवर्ड शिफ्ट जा रही है, जैसे आपको दिखाया था ये वाला, तो ये अथवर्ड शिफ्ट जा रही है, तो ये ट्रांसफर स्ट्रेंथ दे रही है, ये इधर में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ दे रही है। तो दे गिव लॉन्जिट्यूडनल बल्कहेड पे है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ देगी, ट्रांसवर्स बल्कहेड पे है तो विल गिव ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। अब ये डायग्राम जैसे हम स्ट्रिंजर प्लेट देखेंगे अलग अलग, तो हमारी जो शिप है ये आउटसाइड जो शेल प्लेटिंग है काफी स्ट्रेक्स से बनती है। ये स्ट्रेक्स के बारे में आपको एंड में बताएंगे। ये स्ट्रेक क्या होता है? स्ट्रेक बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिप और प्लेट होता है। शिप के आउटसाइड आपको लगता है कि एक प्लेट है क्या? शिप का बाहर शेल प्लेटिंग क्या आपको एक प्लेटिंग दिखती है क्या? नहीं सर। भाई शिप को बाहर से एक लगती है कि अलग अलग लगती है? अलग अलग। अलग अलग। तो जैसे आपकी दीवार ईंटों से बनती है, एक ईंट थोड़ा ना दीवार में, हजारों ईंटें लगती हैं दीवार में, तो उसी तरह हजारों प्लेटें लगेंगी हमारी हल बनाने में। तो उन सब प्लेट से बनती है, उनको जोड़ के वेल्ड किया जाता है, फिर फिनिशिंग करके पेंट लगाया जाता है। तो पेंट लगाने के बाद आपको एक जैसा लगेगा। जैसे आपकी अगर दीवार बनाई जाए, उसमें सीमेंट लगा के पेंट लगाए तो आपको लगेगा एक ही पीस है। लेकिन कुछ जो गांव वाले होते हैं कि अंदर की तरफ तो पेंट लगा देते हैं, सीमेंट लगा, बाहर की तरफ वो ईंट ही दिखाई देती है। होता है ना, गांव के जो दीवारें होती है वो अंदर की तरफ तो सीमेंट लगा दिए, बाहर की तरफ लगाते ही नहीं है, कहते कौन खर्चा करेगा, तो वो ईंटें दिखाई देती है। तो अगर शिप को हम बाहर से लेवल नहीं करेंगे तो हमें भी ऐसे ही लगेगा जैसे ईंटों से बनी है, या मतलब वो सेक्शन से बनी है। लेकिन हम उसकी फिनिशिंग करके पेंट लगा देते हैं तो इट लुक्स लाइक वन सरफेस। अब ये क्या क्या स्ट्रेक हैं ये बाद में हम डिटेल में करेंगे। ये सब स्ट्रेक क्या क्या है ये मैं एंड में जब स्ट्रेक्स कराऊंगा तब बताऊंगा। तो ऊपर की जो डेक स्ट्रिंजर प्लेट है, ये शेयर स्ट्रेक के साथ जो सबसे ऊपर की स्ट्रेक है वो हमारी शेयर स्ट्रेक है, जिसको आप फिश प्लेट बोलते थे। वो फिश प्लेट नहीं है, वो ये शेयर स्ट्रेक है। उसके साथ ये डेक स्ट्रिंजर प्लेट लगती है। उसके बाद हमारी डेक प्लेटिंग आती है, क्योंकि अगर आपने स्कपर देखा हो, रेलिंग के बगल में स्कपर लगा है, तो प्लेट थोड़ी सी आपको दबी लगती है कि नहीं लगती है? वो जो स्कपर लगे हुए हैं वहाँ थोड़ी सी दबी लगती है, नहीं ध्यान से देखना। सर यस सर। यस सर। यस तो वो सर। स्ट्रिंजर प्लेट है। उसके बाद मेन डेक प्लेटिंग आती है। तो जो दबी हुई है दैट इज डेक स्ट्रिंजर प्लेट। उसके बाद मेन डेक प्लेटिंग यहाँ वेल्ड की जाती है। तो डेक प्लेटिंग थोड़ी उठी होती है, डेक स्ट्रिंजर थोड़ी दबी होती है। आपके होल्ड में भी स्ट्रिंजर आते हैं। स्ट्रिंजर बहुत जगह है, पैंटिंग स्ट्रिंजर आपको बताया था, होल्ड स्ट्रिंजर है, डेक स्ट्रिंजर है, ट्रांसफर स्ट्रिंजर है, जो आपके डबल हल में स्ट्रिंजर प्लेट लगी है पैसेज वे की, वो भी स्ट्रिंजर प्लेट है।
अलग अलग जगह पे स्ट्रिंजर का नाम अलग अलग। पैंटिंग रीजन में पैंटिंग स्ट्रिंजर है, डेक के ऊपर उसका नाम डेक स्ट्रिंजर है, होल्ड में होल्ड स्ट्रिंजर है, ट्रांसवर्स में ट्रांसफर स्ट्रिंजर हो जाता है, पैसेज वे में वो उसको पैसेज वे बना देते हैं, वो भी स्ट्रिंजर प्लेट है। अब आता है बल्कहेड। तो बल्कहेड हमारे दो टाइप के होते हैं। एज पर वाटर टाइटनेस हमारे तीन टाइप के हैं। एज पर फायर बल्कहेड आपके तीन टाइप के फायर बल्कहेड भी हैं, वो भी अलग बताते हैं। तो बल्कहेड क्या है, डायरेक्शन वाइज देखो तो दो टाइप के हैं, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। आगे पीछे जा रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल है, साइड में जा रहे हैं ट्रांसवर्स है। अब इसमें भी वाटर टाइट बल्कहेड है कि नॉन वाटर टाइट बल्कहेड है? भाई उसके इतना से पानी नहीं जा सकता तो वाटर टाइट है, पानी जा सकता है तो नॉन वाटर टाइट है। कई बार बाउंड्रीज या केसिंग के ऊपर लगाए थे बल्कहेड। तो दीज आर वर्टिकल टाइप ऑफ डिविजन इन अ शिप, जो हमारी शिप को अलग अलग बाउंड्रीज बनाता है। जैसे ये है, तो यहाँ बेसिकली ये हमारे स्टिफनर लगे हुए हैं। तो ये ट्रांसवर्स बल्कहेड है, ये फ्रेम नहीं है, ट्रांसवर्स बल्कहेड है, वहाँ स्टिफनर लगे हुए हैं, ट्विन डेक है। तो ये ट्रांसवर्स बल्कहेड और प्लेन बल्कहेड, एक होता है कोरोगेटेड बल्कहेड, ये वाले हैं कोरोगेटेड बल्कहेड। इसमें हम बाद में कराएंगे, उसका डायग्राम आपको अच्छी तरह दिखाते हैं क्या कोरोगेटेड बल्कहेड, वो डिटेल में हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कोरोगेटेड बल्कहेड भी। अब ये वाला बल्कहेड देखो, ये कोरोगेटेड बल्कहेड है, कोरोगेशन से बनता है। प्लेन बल्कहेड है जो कोरोगेशन जिसमें नहीं है वो प्लेन बल्कहेड है। ये वाला कोरोगेटेड बल्कहेड ऐसे ऐसे बना होता है, अगर वो ऐसे सीधा सीधा है तो प्लेन बल्कहेड है। ये भी स्ट्रिंजर प्लेट है जो ये लगी हुई है, ये स्ट्रिंजर प्लेट है। तो ये आपकी प्लेन बल्कहेड हो गया, और ये वाला कोरोगेटेड बल्कहेड जो दिखाया था। अब स्टिफनर क्या होते हैं, तो स्टिफनर के पहले आपको स्टिफनर का एक और डायग्राम दिखाते हैं, स्टिफनर क्या होते हैं। ये पहले आप लॉन्जिट्यूडनल का देख लो, फिर स्टिफनर दिखाते हैं। ये आपकी एक्चुअल फोटोग्राफ है, ये गर्डर है, और ये आपका बॉटम ट्रांसवर्स है, ये लॉन्जिट्यूडनल वी नॉच से जा रहे हैं कट के, यहाँ रिवेटिंग की गई है इसकी। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो गर्डर के ऊपर हैं, इसको स्टिफनर कहते हैं, ये मजबूती दे रहे हैं। तो दिस इज स्टिफनर जो होता है आई शेप्ड का होता है, जबकि लॉन्जिट्यूडनल एल शेप का होता है, जब हम डिटेल पे करेंगे जब उस पर आएंगे। स्टिफनर बेसिकली कुछ चीज को भी मजबूती देता है। बुलंद दरवाजे में अगर आप जाओ आगरा में, बड़ा सा दरवाजा बनाया होता है, आपको दिखाते हैं ये स्टिफनर क्या चीज है। पहले इसको जरा सेव कर दें।
सो सपोज एक बल्कहेड यहाँ है, मैंने इस पे, चलो आपको और डायग्राम दिखाई देता हूँ, और डायग्राम बने हुए हैं, इतने सारे बना के क्या करना। तो ये जो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं बल्कहेड पे, इसको कहते हैं स्टिफनर, ऐसे मजबूती कर रहे हैं। तो ये अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये कोई भी स्ट्रक्चर को मजबूती देता है उसको स्टिफनर कहते हैं। जैसे यहाँ फ्लैट बार स्टिफनर है, वो मजबूती दे रहा है, दैट इज स्टिफनर। तो उसी तरह ये गर्डर को मजबूती दे रहा है ये स्ट्रक्चर, इसलिए ये स्टिफनर है, क्योंकि गर्डर स्ट्रक्चर है, उसको मजबूती दे रहा है ये स्ट्रक्चर। सो स्टिफनर क्या कर रहे हैं, लॉन्जिवल कंप्रेशन स्ट्रेसेस ऑन स्टिफन बैक ड्यू टू बेंडिंग, इसको बेंड कर रहे हैं, तो हमने ये स्टिफनर लगा दिया ताकि बेंडिंग ना हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर पे हमने ऐसे वर्टिकल स्टिफनर, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगा दिए, तो ये बेंड नहीं होगा। तो ये स्टिफनर है। अब आते हैं पिलर क्या है। तो पिलर आपने ब्रिज विंग में के नीचे जो स्ट्रक्चर लगा है टैंकर्स में, वो पिलर है। रो रो में बहुत सारे पिलर्स होते हैं कि ट्रांसवर्स बल्कहेड को हटा दिया जाता है और उसको एक डंडे पे ऊपर सपोर्ट करते हैं, वो पिलर है। तो पिलर विल गो राइट टिल द बॉटम प्लेट फ्लोर, वहां जाके स्ट्रेंथनिंग करता है। तो ये वाला आपका सॉलिड प्लेट फ्लोर है और ये ब्रैकेट फ्लोर है, 3D व्यू है। इसमें यहाँ मार्जिन प्लेट लगा है, यहाँ आपका ब्रैकेट, यहाँ आपका ब्रैकेट है, और यहाँ आपका फ्रेम है। ये वाला आपका ब्रैकेट फ्लोर है। ये आपका सेंटर लाइन गर्डर है, इंटरकॉस्टल साइड गर्डर। ये आपके, ये तो बड़ा होल है, तो इसको हम लाइटनिंग होल कहेंगे, वैसे छोटे होते हैं लाइटनिंग होल ये वाले। दीज आर पिलर्स विच आर एंगल स्ट्रट, इस टाइप का होता है। यहाँ मैंने डायग्राम में किया था, एंगल स्ट्रट वाली ये शेप होती है। तो ये इस तरह से ब्रैकेट फ्लोर में लगते हैं, तो पिलर का काम कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली नॉट पिलर्स। ये कोई सरिये की दुकान में जाओगे तो ऐसे चैनल पड़े होते हैं, इनको अगर सीधा सीधा ऐसे खड़ा कर दो तो एंगल स्ट्रट है, उसको नीचे लगा दो तो चैनल बार। दीज आर एंगल स्ट्रट्स जो आपके ब्रैकेट फ्लोर में लगते हैं। तो आपको ये डायग्राम, तो ये आपका सॉलिड प्लेट फ्लोर है, और इसलिए ये मैनहोल बने हुए हैं, और ये जो चक्कर ये लगे हुए हैं डंडे, ये एक्चुअली स्टिफनर हैं जो उस तरफ लगे हैं इस प्लेट को मजबूत करने के लिए। और ये एंगल स्ट्रट है जो इसको दबाव अगर ऊपर से पड़े टैंक टॉप से दबे ना, इसलिए ये लगे हैं। इसकी डिटेल अभी कराएंगे, व्हेन आई डू डीबी टैंक स्ट्रक्चर, तो उसकी डिटेल अब कराएंगे। अभी तो प्रीलिम्स बता रहे हैं, एक्चुअली कराएंगे। अब आता है हैच गर्डर। हैच के नीचे भी गर्डर आता है जो उसको सपोर्ट करता है। तो हैच गर्डर बेसिकली ये
हाफ बीम है, ये हैच के नीचे जा रही है अथवा शिप्स। जो फोर एंड हाफ जाता है, जैसे ये है, ये हैच बीम है और इसके नीचे ये जो लगा है ये हैच गर्डर है, फोर एंड हाफ जा रहा है। तो हैच के नीचे दोनों लगे होते हैं क्योंकि इसको स्ट्रेंथन करना है। So hatch girders are longitudinal main structures in hatch that support the vertical loads. अब आता है बीम। तो बीम हमने किया हुआ है ऑलरेडी, स्ट्रक्चरल मेंबर्स दैट आर फिटेड एट एवरी फ्रेम, they go athwartships, support the deck or carrying various loads. ये आपके बीम्स हैं और ये फ्रेम है और ये बीम नहीं है। अभी तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अभी तक कोई डाउट है कि नहीं? सबको समझ आ रहा है ना? नहीं। बहुत आराम 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 से करा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं, आराम से करा रहा हूँ। इसलिए वीडियो 2 बार दिखाया ताकि इससे समझ आए, नहीं तो आपको पहली बार ये दिखाऊंगा कुछ समझ नहीं आएगा। वीडियो से थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाता है एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अब आता है हैच कोमिंग। अब हैच कोमिंग क्यों लगाते हैं? ताकि पानी हैच में ना आए। अगर वो हैच कोमिंग ही ना हो तो हैच के अंदर पानी आ जाएगा। सो कोमिंग इज वर्टिकल सरफेस ऑन शिप to deflect or prevent entry of water in hold. So it is a raised section of plating around the opening which is hatch. तो इसको हम हैच कोमिंग कहते हैं। ये मेन डेक हो गया, तो हैच कोमिंग उठा हुआ है so that sea water doesn't enter the hatch. अब आता है बुलवर्क। ये हमने किया था डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस में, ऐसे लगा होता है स्ट्रक्चर। तो बुलवर्क बेसिकली एक्सटेंशन है शियर स्ट्रेक का, और इससे जैसे अब सीढ़ी के साइड में लगा होता है बुलवर्क, सो दैट पानी समुंदर का सीढ़ी से उतर रहे हो तो अब आपके ऊपर डायरेक्ट ना आए। सो इट इज अ प्लेट on each side of the ship to protect the passengers and crew from falling to sea. It is extension of ship side above the level of deck. और कई बार आपके बुलवर्क पूरा कंटिन्यूस होता है, कई बार कनेक्टेड टू रेलिंग होता है। When it is connected to railing, तब वहां आपका डिसकंटिन्यूटी स्ट्रेस होता है। So ये सडनली अगर आपकी कंटिन्यूटी ना रहे तो क्रैक हो जाएगा। तो बेसिकली वो एंड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर को ऐसे टेपर कर देते हैं सो दैट डिसकंटिन्यूटी ना रहे। सडनली एक स्ट्रक्चर को ऐसे ज्वाइन किया जाए तो यहाँ क्रैक आ जाएगा। अब ये आता है बाउ एंड स्टर्न फ्रेमिंग, उसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। ये आपका स्टर्न फ्रेम होता है पीछे में, टू टेक द लोड ऑफ द आर्क रीजन, सपोर्ट योर प्रोपेलर, सपोर्ट योर रडर। कई इसके कारण होते हैं स्टर्न फ्रेम का। जब ड्राई डॉकिंग करते हैं तो इसके ऊपर लोड लेते हैं। ये सबसे मजबूत एरिया है हमारे शिप का, स्टर्न फ्रेम। सो बाव में पाउंडिंग स्ट्रेसेस होते हैं, इसलिए एडिशनल स्टिफनिंग करनी पड़ती है। ये डिटेल आपको बाद में कराएंगे। देन उसके कारण आपको स्ट्रेसेस के लिए आपके स्ट्रक्चर जो हैं मजबूत बनाने पड़ते हैं। These details we'll be doing later. और ये स्टर्न फ्रेम और आफ्ट एंड स्ट्रक्चर बाद में हम इसका बनाएंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ डेफिनेशन कर रहे हैं। अब आता है कैंड बीम्स। तो कैंड बीम्स बेसिकली पैसेंजर शिप में होता है। जरा आपको पैसेंजर शिप की आफ्ट रीजन दिखाऊं। कैंड बीम होता क्या पहले, पैसेंजर शिप में ही क्यों होता है, बाकी शिप्स में क्यों नहीं होता? तो इसका जरा आपको दिखाएं कि पैसेंजर शिप जो है उसका आफ्ट राउंडेड होता है, उसका आफ्ट सेक्शन जो होता है वो राउंडेड होता है।
नहीं तो नॉर्मल शिप्स जो आपके कंटेनर शिप्स है, टैंकर है, उनका स्टर्न ट्रांसफॉर्म मतलब फ्लैट होता है, और पैसेंजर शिप का स्टर्न राउंडेड होता है, और उसी के कारण हमें वो चाहिए होता है आपका कैंट बीम्स। चलो पैसेंजर शिप का स्टर्न दिखाता हूँ। कैंट बीम्स को अगली बार कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा हो गया है ना, कैंट बीम्स अभी नहीं कराएंगे, 44 से अगली बार करेंगे। एक दिन में इतनी कैपेसिटी आपकी है नहीं कि इतना नई नई चीज़ें ले लो एक साथ। डायग्राम नहीं हो रहा है तो फिर मैं बना के दिखाता हूँ। सो सपोज ये आपका पैसेंजर शिप है, तो पैसेंजर शिप ऐसे राउंडेड होता है, ठीक है, ये राउंडेड स्टर्न फ्रेम, ये राउंडेड होता है। बट आपके दूसरे जहाज में फ्लैट स्टर्न होता है, जैसे ये वाला है। अब ये वाला फ्लैट स्टर्न है, तो किसी के में राउंडेड था ऐसा स्टर्न, ओनली पैसेंजर शिप में मिलेगा। नॉर्मली आपका स्टर्न ऐसे फ्लैट रहता है। जब आप स्टेशन करते हो, देखते हो यहाँ कईयों के एंकर भी लगे होते हैं, यहाँ एक स्टर्न एंकर यहाँ लगा होता है, ऐसे करके आपका स्टर्न एंकर लगा होता है, छोटा सा एंकर होता है स्टर्न का। और यहाँ आपका रेलिंग लगा होता है, सिमिलरली यहाँ आपका रेलिंग लगा होता है, यहाँ आपका पनामा लीड होता है। पनामा लीड क्यों होता है? क्योंकि पनामा लीड स्ट्रेंथन पॉइंट होता है फॉर ईटीए। आपका ईटीए कनेक्शंस के लिए यहाँ आप एंकर केबल भी डाल सकते हैं, प्लस यहाँ से आप सारी वायर लेते हो, है ना। उपडेक याद आया? ये यस आपकी सर। रेलिंग होती है यहाँ, और यहाँ आपके ये रेलिंग लगी हुई है। तो ये स्ट्रेंथन पॉइंट होता है आपके आर्ट में, सो दैट ईटीए जो है, इमरजेंसी टोइंग अपैरेटस, वो लगा सकते हो। तो ईटीए नॉर्मली यहाँ बॉक्स में पड़ा होता है, तो ईटीए बाद में कराएंगे। तो आज अभी ये राउंडेड स्टर्न की बात कर रहे थे, वो कैंट बीम्स उसमें अगली बार कराएंगे, कैसे कैंट बीम लगती है राउंडेड स्टर्न फ्रेम में, वो अगली बार कराते हैं। ये ट्रांसफॉर्म स्टर्न दिखा दिया कि फ्लैट स्टर्न आपके जहाजों में होता है। ठीक है, फिर आज के लिए बहुत है। वी विल हैव अ ब्रेक नाउ। नेक्स्ट